Yeah. I don't believe it. Like, I am so unimpressed. I am. मैं जितने भी आदमियों से मिलती हूँ मुझे कहीं ना कहीं होता है कि you know, you are a man. Man up. अपने आप को संभालना आना चाहिए बगैर किसी औरत के, जैसे हम अपने आप को संभाल रहे हैं बगैर किसी आदमी के. हमें हर वक्त एक बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें हर वक्त एक भाई की ज़रूरत नहीं पड़ती. I need my dad a lot. You need your dad. I don't love need my my dad. dad. I love my dad. I love my brothers. I don't need them. I love everyone. I don't need anyone. So I think I'm different that way. I do need my family with me. Like, बिल्कुल सही है. It also depends on how you grow up. Yeah. तो मैं बड़ी independently grow up हुई हूँ, तो अब मेरा ये सीन है कि ठीक है, मैं गुड हूँ. मैं गुड हूँ. मैं गुड हूँ. कोई मसला ही नहीं है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आदमियों को एटलीस्ट हम जैसी औरतों के साथ डील करने की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए. क्योंकि औरतों को भी ट्रेनिंग दी गई ना. We were trained to have a voice. बिल्कुल. You were trained to be independent. You were educated on it. You were empowered in it. बिल्कुल. So then, like, the other gender also needs to be empowered to understand that this is also बिल्कुल. that we're all being raised and like growing up in the same kind of environment. कि देर से उठ रहा है बच्चा, उसको अब खाना भिजवा दो. क्यों? ब्रेकफास्ट क्यों भिजवाना है? वो खुद उठ के क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो एक लड़का है इसलिए. My brothers, I make them clean. मैं बचपन से, it's not even now, मैं उठती थी और सारा नाश्ता वाश्ता वो सारा हो गया. मेरे से जो छोटा है उससे मैं बर्तन धुलवाती थी, जो सबसे वाला छोटा है उससे मैं झाड़ू लगवाती थी. And I know कि उनकी बीवियां बहुत खुश रहेंगी, उनकी बीवियां मुझे दुआएं देंगी. अच्छा, anyways, forget about that. I want to know about your journey discovering you. Like my journey discovering me. Yeah. And you know, like, and not just finding yourself, like owning your own space. Yeah. That's a very important thing that लोगों को यहाँ पे नहीं कोई इतनी बात होती इस बारे में कि how do you own your own space? Like, this is whatever space that you're occupying to truly own it. I feel कि ये work in progress है और I feel कि ये होता रहेगा. ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी अपने साथ comfortable हूँ तो बस ठीक है, ये सही है. I think कि आहिस्ता बेहतर होता जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ वक्त गुजारना और मजबूरन नहीं, choose करना खुद को over others का other company. Like, you know, if choose yourself first. Definitely. Like, if I have friends, I love my friends, but there is a time where if my friends are gonna ask me कि चलो बाहर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, I'd be like, I'm just gonna sit by myself, watch something, listen to a little bit of music, dance, look at myself in the mirror. I know it's some people will think I'm obsessed with myself. You can think I am obsessed with myself because क्योंकि हमारे शुरू के कुछ साल, हमारे पूरे 20s, हम अपने आप को हेट करने में लगे रहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, इसने हमें ये कहा था, मैं पतली नहीं हूँ, मैं इतनी फिट नहीं हूँ, मैं अब मोटी हो गई हूँ, अब मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मैंने एक्टिंग ठीक नहीं की, इसको मैं अच्छी नहीं लगी, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है. And then you know what? After a while you just realize, hey, look at me. I'm unbelievable. Look at me. मतलब खुद को आप सिर्फ प्यार से अगर देखना शुरू करेंगे तो आपकी जर्नी कितनी आसान हो जाएगी. और अपने साथ मतलब अगर मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारती हूँ और मीटिंग्स हो या शूट हो, उसके बाद जो मेरा डे ऑफ आता है वो लाइंड अप होता है कि मैं किसी से बात भी नहीं करूँगी. मेरा फ़ोन बिल्कुल दूर होता है, साइलेंट पे होता है और सिर्फ मैं होती हूँ और मैं होती हूँ और बहुत मजा आता है. Brilliant. बहुत मजा आता है. No, it's really fun. I love spending time with myself, and I thoroughly enjoy it. And initially, I remember and you're right, in my 20s also, I also felt the same way, that I was, I think, giving too much of myself Definitely. to everything around me. Definitely. And I think in my 30s, I curtailed it and brought all of that back within me. आहिस्ता आपको होता है कि वो moment क्या था when you saw yourself in the mirror and you I think viewed yourself differently? I think कोई एक moment तो particularly मुझे याद नहीं है. I know that traveling really helped me a lot. I traveled by myself a lot. In the past 2 years, everyone keeps asking me कि तुम कहाँ चली गई थी? Where did you disappear to? I didn't disappear. I was actually looking for myself.
you know. And I went to Italy. I lived there for 3 months. I went on this little trip, Euro trip, and I kept going from country to country to country to country in Europe for a few months. Then I lived in Budapest for a few months. Then I lived in the US for a few months. And I fell in love with myself, my own company, my own jokes. मैं ऐसे बैठ के हंसती रहती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे jokes मैं crack करती हूँ. I'm like, bro, I'm a genius. Bro, I don't need anyone. This right here is all I need. So and I you know think what? Zindagi ka, like, that's a crux of life is, you know, to enjoy yourself while you're doing it. बिल्कुल, क्योंकि मुझे I know a lot of people are gonna think कि हाँ लेकिन ऐसे आपको आगे जाके किसी की ज़रूरत पड़ती है और ये और वो. बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करेंगे और आप खुद से भागते रहेंगे, तब तक आप दूसरे को क्या प्यार देंगे और दूसरे को क्या कंपनी देंगे और दूसरे को एक फुल इंसान कैसे देंगे. या लेंगे कैसे उनसे? या लेंगे कैसे? Exactly. लेना, because you are in a relationship, you're also taking as much as you're giving. बिल्कुल, So if you're not 100% content with who you are, then how are you going to give or receive? Or receive, exactly. In the same way. आपका, or choose also for yourself. बिल्कुल, आपका पूरा होना किसी loved one के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो मेरा ये बहुत, मैं अपनी सारी दोस्तों को भी encourage करती रहती हूँ. I tell literally everyone, I'm like, listen, you put yourself, it's not even about women, it's about just being a human. A lot of men also don't put themselves first, and they have family and they have to look out for their family, and I'm like, bro, just do what makes you happy. You know, अपने लिए पहले करो, अपने आप को खुश करो, और फिर आगे जब तुम खुश होगे तब तुम्हारे इर्द गिर्द सब खुश होंगे. Exactly, because you're going to bring that energy, that positivity and that like happiness बिल्कुल to everything. Because when your nazariya changes, बिल्कुल, and when your perspective is actually changing, then you're actually makes a huge difference. Your surrounding won't change, but just because you're thinking and looking at it differently, आपके लिए वो ही हालात बिल्कुल बदल जाते हैं. बिल्कुल बदल जाते हैं. It's really about the mindset. और ये पिछले 2 महीने में मैंने प्रैक्टिस किया है. मैं रोज उठ के अपने आप को मॉनिटर करती हूँ. How am I feeling? How do you feel love? You know, do you feel like you want to cry? Do you feel emotional? Do you feel happy? Why do I feel happy? Is there a reason? So these are the questions you need to ask yourself. Like it's wonderful that you're seeing this, because I mean, like, and you know, like when you said that, like, you need to take that time out. बिल्कुल. I think when I started taking 3 minutes out a day for myself. बिल्कुल, बिल्कुल 3 मिनट दिन के लिए. 3 मिनट, हाँ. 3 मिनट का मैं टाइमर लगाती, जैसे कि 3 मिनट सिर्फ मेरे हैं. बिल्कुल. मर्जी मैंने इसमें बैठना है, मैंने सांस लेना.